Assalamu alaikum. Today we are discussing September by Ted Hughes. September was published in Birthday Letters in 1998. It was released only a few months before his death. It came after the death of his wife, Sylvia Plath, and the establishment of her legacy as one of the most important feminist poets of all time. Rightly or wrongly, Hughes' own reputation was tied to his treatment of Plath during the marriage. Some believe that he drove her to kill herself through his emotional abuse and affairs. So it was with this collection that he sought to redeem himself in the eyes of public. The poem takes the reader through a series of images that outline a state of being outside of time and within memory. The speaker describes how we, presumably him and his lover, sit and watch the world changing around them. There is no clock to count the changes that are occurring. It is something more emotional and ephemeral. Hughes focuses on small moments like the feeling of someone's wrist while repeatedly emphasizing that the time means nothing. The poem concludes with the entrancing image of trees casting their crowns into pools, which alludes to the change that Hughes has been hinting at throughout the piece. The poem has several themes in that. For example, theme of relationship, theme of time, timelessness, tragedy, breaking of relation, September, that stands for autumn, that in relationship. So here we come to know that he is using a kind of imagery that is very deep, philosophical. For example, in first stanza he says, "We sit watching the dark slowly unfold. No clock counts this. When kisses are repeated and the arms hold, there is no telling where time is." So apparently it says that जो दोनों lovers हैं वो बैठे हुए हैं, they are kissing each other और उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में लिया हुआ है. So these arms can stand for the arms of male and female partner and also the arms of clock too, जो कि एक जगह पे मौजूद हैं, रुक चुके हैं, यानी टाइम रुक चुका है. तो लेट नाइट का सीन है, डार्क जो है स्लोली अनफोल्ड हो रहा है और जो घड़ी है ऐसा लग रहा है कि टाइमलेसनेस में चला गया, चल नहीं रहा, और यानी वो जो लम्हे हैं वो अमर हो चुके हैं. So the first stanza of September, the speaker begins by using the first person plural pronoun we to refer to himself and to his beloved. This another person that is with her is sometimes interpreted as his wife Sylvia Plath, but without evidence to confirm this, the case is shouldn't be assumed. So time is the primary theme in the stanza and those which follow. In fact, in each stanza, close reader can find more words which are directly referencing towards time. So in this case, Hughes actually uses the word time and clock. He describes how his speaker and the lover, they both sit up late at night in one another's arm, and they watch the clock slowly unfold around them, and this is wonderful example of imagery. So he is speaker, that first person. He emphasizes the fact that in movement like this there is no time, so it is timelessness. It has no meaning when he is with his lover and they are existing very simply together. The word arm, as I told before, may be for clock too. So reader might also find themselves interpreting the phrase dark slowly unfolds in different ways. So it might refer to the night, or to change of season, or to change of circumstances, or to change of a relationship or end of relationship. So basically this may be referred to as the end of relationship between Ted Hughes and Sylvia Plath. So we continuously see that he talks about time here. The time is in shape of clock. We come to see that all these words, they are referring
to time, and then again he uses the word time, and then the dark slowly unfolds. This tells about his relationship that is ending, or season that is changing, or circumstances that are changing, or even the night itself. So next stanza, it is midsummer. So in this midsummer, the leaves hang big and still. So this still is also referring to time. Behind the eye a star. Under the silk of the wrist see, tell, time is nowhere. So then he refers to midsummer कि मिड समर का टाइम है, लीव्स जो हैं वो बड़े हो चुके हैं और स्टिल हैं इस वक्त, यानी इसमें वो हवा नहीं चल रही कि लीव्स हिले, और स्प्रिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी आई, पत्ते बड़े हो चुके हैं बाय द टाइम ऑफ मिड समर. और बिहाइंड द आई अ स्टार, वो दूर आंखों में जो सितारा एक हम देख रहे हैं, एंड सो फॉर ऑल्सो रिफरिंग टू द अंडर द सिल्क ऑफ द रिस्ट. So wrist may be of his beloved or the person sitting with him, a sea. So he can imagine a sea there. And both the star and sea are telling him that time is nowhere. It is again timelessness. So in the second stanza of September, the speaker goes on to give more details about the sea. But the specific time and place are less important than the experience they're having. So it is midsummer. The speaker says that leaves are still in the tree and there is no breeze that is blowing. Time is paused between spring, summer and fall. So in तीनों seasons में time रुक चुका है. Progressing nowhere, कोई change नहीं आ रही. Only existing. Yes, time is there, लेकिन उसमें movement नहीं है. So the speaker जो है वो emphasize करता है, फोकस करते हुए जो इमेजरी उसने दी स्टार की और सिल्क ऑफ द रिस्ट. सो दीज आर टाइनी पार्ट्स ऑफ देयर वर्ड that are capable of consuming them. The silk of the wrist contains a sea, so it is a limitless in its expression or expanse. So the last line, like a wrist cannot contain a sea, लेकिन इसीलिए ये timelessness, limitlessness का इसने इफेक्ट दिया यहाँ पे. तो जो लास्ट लाइन है वो बड़ी क्लियरली बता रही है टाइम इज नो वेयर, कि देयर इज नो टाइम. सो यूज डिपिक्ट्स इन इट like some physical that could or if possible be located, something physical, but at the moment it is nowhere, or it isn't bothering them, so they are not bothered by the time, because time seems not to be existing, seems not to be there somewhere. So ये second जो imagery है that is about timelessness and more. उसके बाद like limitlessness, जिससे हम देख रहे हैं कि silk of the wrist see, कि उसकी हाथों के ऊपर जो सिल्क है उसके नीचे एक समुंदर है, which is not possible, but still it is giving an imagery which is connected with time. We stand, leaves have not timed this summer. Again, we see that the word time is here. No clock now needs, tell we have only what we remember. Minutes uproaring with our heads. So again, many references towards time. So this poem is having time as a very important theme, but an important theme है इसके अंदर. So in the third stanza of the poem, just like the second, Hughes begins with an example of giving the time and timelessness. So the lines read, we stand, leaves have not timed the summer. So this line also brings in what should by now be familiar imagery, that of leaves, time and summer that we have been discussing. He speaks again on how there is no clock, no time, nor is there a record of time in the word that they are existing in. It is at this point the poem that the memory becomes quite important. So ये memory का theme अचानक बड़ा important हो जाता है. He uses the line, tell we have only what we remember, कि हमारे पास वही है सिर्फ जिसको हम याद कर रहे हैं, जो चीज़ हमें याद है सिर्फ वही हम उसमें ही वक्त गुजार रहे हैं. सो दिस इज फॉलोड बाय अ रेफरेंस टू द माइंड, हेड एंड मिनट्स. उसका भी एक रेफरेंस देता है कि
हम खड़े हुए हैं इस तरह कि लीव्स जो हैं वो उन्होंने अभी तक समर को टाइम नहीं किया, अभी रुक चुका है वक्त, क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपनी यादाश्त में, हम अपनी उन यादाश्तों को याद कर रहे हैं, रिमेम्बरेंस में हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं। जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर टाइमलेसनेस है, टाइम स्पैन नहीं है, टाइम रुक चुका है। जो मिनट्स अप्रोरिंग जो उठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो है कि वक्त वहां पे चल रहा है जहां पे हम सोच रहे हैं। हमारी लाइफ में टाइम रुक चुका है लेकिन हमारी मेमोरीज के अंदर टाइम जारी है। जिससे हम सोचते हैं तो कई दफ़ा वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट, वी आर थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। सो टाइम और टाइमलेसनेस इज ऑल्सो देयर। सो टाइम की एक तेज रफ्तार वहां पे देखी जा सकती है लेकिन ही फील्स कि उसकी लाइफ में जो टाइम है वो रुक चुका है। सो टाइम रुकना जो है वो itself stands for boredom, nothingness, nihilism, or what he was feeling after the death of his first wife, second wife, his daughter, तीनों ने suicide की। So ये एक तरह से इसकी अपनी डेथ से पहले लिखी गई poem which tells eventually about autumn that came to his life। और वो इतना प्रोलॉन्ग हो चुकी है चीज़ कि वो टाइम ख़त्म नहीं हो रहा कि फॉर एग्जांपल वेकेशन से पहले हमें वेकेशंस का वेट होता है लेकिन वेकेशन जब हो जाती हैं वंस वी गेट यूज्ड टू इट, सो फिर वो टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हिज केस। नाउ इन फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा he says, like an unfortunate king and his queens, when the senseless mob rules, and quietly the trees casting their crowns into the pool. So यहाँ पे we come to have a different imagery. So in the final 4 lines of September, the speaker uses enjambment, जो कि एक literary device है, to connect the first line to the fourth line of the third stanza. So here he compares their experience to an unfortunate kings and queens who are looking back on their life before senseless mob rules। वो जो अपनी जिस तरह वो जो बता रहा था कि वो मेमोरी में देख रहे हैं, मेमोरी को सोच रहे हैं, तो उसमें वो सोच रहे हैं और एक सेंसलेस मॉब है उनके सामने जो रूल कर रहा है। यानी इट मीन्स कि किंग एंड क्वीन आर नो मोर रूलिंग, इट इज़ द मॉब दैट इज रूलिंग। तो they too can exist in timeless space, one that's outside the reality of time because it exists in their mind, जिसमें हमने बताया पहले थर्ड स्टैंजा में कि वो सोच रहे हैं, टाइम चल रहा है लेकिन उनकी मेमोरी में चल रहा है। So final 2 lines are filled with imagery. He uses word crown to represent past, the summer, and trees on leaves which are being cast into the pools of memory. तो यहाँ पे past का एक reference आ रहा है, things are changing and finally, memory is all that's left of the midsummer. It's also important to connect the word crown back to the king and queen in the line one of his stanza, जो कि पहली लाइन है इस जो इन यानी किंग एंड क्वीन का रेफरेंस फर्स्ट लाइन में दिया गया। सो यहाँ पे वो जो जिक्र हो रहा है कि अनफॉर्चुनेट किंग और क्वीन की तरह हम अपनी टाइमलेसनेस को देख रहे थे अपनी मेमोरी में, लेकिन रियलिटी में एक जो मॉब था, सेंसलेस मॉब, वो रूल कर रहा था। यानी जिस तरह किंग और क्वीन का तख्ता पलट दिया गया अवाम ने, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि किंग और क्वीन उन्हें मार दिया गया और मॉब ने रूल किया, तो किंग और क्वीन सेम में बैठे थे, वो अपनी मेमोरीज में अच्छा टाइम सोच रहे होंगे। इसी तरह ये दोनों भी जो लवर और बिलव्ड थे, ये दोनों कंपेनियंस थे, वो थिंकिंग अबाउट समथिंग इन देयर माइंड। और जो ट्रीज थे वो अपने क्राउन्स कास्ट कर रहे थे पूल्स के अंदर, यानी जो नीचे पानी था उसके अंदर जिस तरह पत्ते गिरते हैं इस तरह क्राउन्स जो थे वो नीचे गिरे थे। इट मीन्स के एंडिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी ये जो क्राउन्स का पूल के अंदर गिरना, दैट सजेस्ट एन एंडिंग ऑफ समथिंग। और ये अनफॉर्चुनेट किंग एंड क्वीन दैट मे बी रिफरिंग टू ह्यूज एंड सिल्विया प्लैथ एंड देयर रिलेशनशिप, द वे इट केम टू एन एंड। और जो सेंसलेस मॉब है दैट मे बी रेफर टू द सिचुएशन दैट वाज देयर। सो उस सिचुएशन में व्हेन द मॉब वाज रूलिंग, so it was such a situation which was a hostile one, जिसमें अब he feels कि he is left alone और अब उसके साथ कोई भी नहीं है। he is all alone living the September in his life which will soon turn into winter that is eventually standing for death, और वाकई इसके बाद इसकी डेथ भी हो जाती है। So this poem was about the end of relationship, about time, timelessness, about limit, limitlessness,
और ये सारी की सारे जो themes हैं, they're very much here in abundance. So I hope you understood the main idea of the poem. Thank you very much.